Hello kids, how are you all? I hope you are all doing good. So we are back on favorite learning platform Learn Forward and we will study from Pitara. This is chapter number 16, regular and reverse counting. Regular counting, जो counting आपने पढ़ी है, the counting which you have learned like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that is a regular counting. And reverse counting होती है backward counting, मतलब उल्टा count करना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. जो ऑर्डर होता है वो सेम रहता है, बस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है. हम वैसे 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, बट रिवर्स काउंटिंग में हम कोई भी नंबर जो होगा उससे उल्टी काउंटिंग करेंगे. सपोज यू आर गिवन नंबर 15, अगर आपको 15 मिला है, सो यू हैव टू राइट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 15. तो कैसे स्टार्ट होगी? उल्टा चलेंगे. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड सो ऑन. इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज बैकवर्ड काउंटिंग and regular counting, which you have already learned. So let's start the chapter now. Regular counting, ascending order. जो regular counting होती है, the counting which you have learned 1, 2, 3, 4, 5, ये ascending order में होती है. अब ascending का order क्या होता है? जो अभी हमने last chapter में पढ़ा कि numbers increase होते हैं. जब numbers increase होते हैं, that is the ascending order. जब छोटे से बड़े नंबर पे हम जाते हैं, वो होता है ascending order. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये हम रेगुलर काउंटिंग कर रहे हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हम जा रहे हैं. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. रिवर्स काउंटिंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर. रिवर्स काउंटिंग जो होती है, उल्टी काउंटिंग, वो डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है. Like 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, इसमें क्या हो रहा है? The numbers are getting decrease. जो numbers हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं. So, this is reverse counting or descending order. So, let's write the answer now. Write in ascending order मतलब छोटे से बड़ा लिखना है. सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर तक हमें जाना है. 9 to 16. So we will start from 19 and we will write till 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now another one is 7 to 13. So we will start from 17 and we will write till 13. हम छोटे से 7 छोटे numbers हैं, 13 which is the big number, we will write till there. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, इस तरीके से we have to write in the ascending order. 6 to 11. So, 6 comes first, then 7, 8, 9, 10, 11. So, you can see the numbers are increasing whenever we start from 6 and we are writing till 11. 6 is the smallest and 11 is the largest in all these numbers. Now, let's start from 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So, the numbers are increasing, they are in the ascending order. Now, 13 to 20. We will start from 13 and write till 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Now 11 to 19, we will start from 11, write in ascending order till 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Now write in descending order मतलब अब बड़े से छोटा नंबर. 18 to 13, that is also reverse counting. So 18, 17, 16, 15, 14, 13 उल्टी काउंटिंग लिखेंगे. अब 11 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक लिखेंगे. So 11, 10, 9. So done. Now 17 to 15. We will start from 17 and we will write 16 and 15. So 17 से start करेंगे reverse counting. Then comes 16 and after that 15,
Now 14 to 8. We will start writing from 14 and write till 8. This is our reverse or descending order. 14, 13, to 13 से पहले 12, then 11, 10, 9 and 8. So this is a descending order. But numbers जो है बड़े से छोटे होते जा रहे हैं. 14 से कम होता होता नंबर 8 पर आपको 8 तक लिखना है. Now 18 to 12. So reverse counting 18, 17, 16, 15, 14, 13 and 12. So this is the descending order. Now last 20 to 14. So we will start from 20, then comes 19, then smaller one is 18, 17, 16, 15 and 14. So you can see जो numbers हैं यहाँ से छोटे बड़े number से छोटे numbers जा रहे हैं. जो counting है that is in reverse order and the numbers are getting lesser. So when the numbers get lesser, it is a descending order, and when numbers increase, जब हम normal अपनी जो हमारी counting है regular counting लिखते हैं, that is ascending order. So I hope everything is clear. So thank you for joining. Happy learning.